Every harvest tells a story of effort, of hope, of feeding a nation. Every year, millions of tons of food is lost between the farm and our plate. This is called post-harvest food loss and waste. India lost food worth 1.5 lakh crores rupees in the year 2020 to 2021. And since 86% of farmers are small and marginal, the impact of these losses falls most heavily on them. This mounting loss isn't accidental. Food loss starts in the field post-harvest and stretches across every step that follows. 60% नुकसान आहे आता सध्या शेतीमध्ये ट्रान्सपोर्टच्या कारणास्तव किंवा स्टोर नहीं है. गाड़ी जाते जाते बारिश आ जाता है, बारिश आ गए तो आगे वो व्यापारी क्या करता है, नहीं अभी गीला होगा, ऐसा होगा, वो मार्केट तक जब तक जाता नहीं तब तक वो रिस्क है. काश्तकार वेट करता है कि अभी रेट बढ़ेंगे उसके बाद में हम माल तोड़ेंगे. अगर काश्तकारों को सर शुरुआत से अगर रेट मिल जाए तो इतना लॉस उनका नहीं होगा. Across Maharashtra and Madhya Pradesh, a quiet shift is underway. WRI India, in partnership with BAIF Development Research, Samunnati, and ICAR, Directorate of Onion and Garlic Research, is working with farmers to protect the value of every harvest. Experts from BAIF and Samunnati work directly with small, marginal and women farmers, teaching simple, practical methods to reduce post-harvest losses. At WRI India, we believe in systems orchestration towards solving the problem of food loss and food waste. So when we interacted with farmers, a critical gap that emerged was the lack of awareness around what is food loss, how to measure it, and what can be certain ways towards reducing it that's in their control. Which is where this idea of this capacity building model came through for us. So we have, for specific commodities, developed post-harvest training modules towards reducing losses in collaboration with other academic institutions. किसान के साथ जब हम जाते हैं ना तो 3 चीज़ें हम विशेष कर देखते हैं. एक तो किसान की लागत कम होना है, उनकी उपज ज़्यादा हो, और ईजीनेस जो किसान करता है ना उसमें कैसे इजीनेस किसान को है. तो इस 3 बातों का हम विशेष ध्यान रख के अपने मॉड्यूल्स को तैयार करते हैं. और इसमें जो हमारा खासकर एक्सपर्टाइज WRI का रहा और हमारे साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व रहे, उन्होंने मॉड्यूल को इस तरह से बनाया है कि किसान इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझ लेता है और उसको अडॉप्ट भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहा है. Across 122 villages in Madhya Pradesh and Maharashtra, more than 3,500 farmers, including women, were trained to reduce losses in onion, tomatoes, and orange value chains. Each training module is tailored to the specific crop, ensuring that the practices are relevant to what farmers grow. जैसा हमको बताया गया, अगर टाइमिंग पर उसकी तुड़ाई करके उसको बाकायदा पेटी में उसकी पैकिंग करके और वो जो लिक्विड लगा के अगर अच्छी तरीके से उसकी जचाई करके अगर आगे तक के अपन पहुंचा दिए तो सर वो संतरा टाइमिंग पे पहुंचेगा. The sessions are scheduled around the lives of farmers, often in the evenings, so learning never interrupts their livelihood. With crop-specific modules and hands-on methods and role plays, these trainings turned existing research into easily understood, farmer-friendly knowledge. For many, it is their first formal exposure to post-harvest management, and they are eager to adopt what they learn to perfect their produce, reduce losses, and strengthen their incomes. आज आपका ट्रेनिंग हुआ, इसी में हमको मालूम पड़ा टमाटर का हार्वेस्टिंग कैसा करना है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग कैसा करना है, पैकिंग कैसा करना है. WRI इंडिया है, उन्होंने हमको प्रशिक्षण दिया है. अगर उस पे काम करते तो हमारा लॉस कम हो जाएगा. This is not just about saving crops. It's about improving access to nutritious food, supporting farmer incomes, and easing pressure on our ecosystems. When every harvest is valued, we are growing a sustainable future for people, nature, and climate.